tables. Till now, we have studied the application of character table toward the bonding, how you can derive the uh, sigma bonds and pi bonds in a character table. There were procedures for that calculation, और वो जो है लीड करते हैं, हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को लेते हैं, और then ultimately we can derive the hybridization of the molecule. So we talked about this. We will now move toward the second application of the character table, which is the derivation of IR and Raman bands for a molecule. So we can use character table for the derivation of IR and Raman bands. In order to derive these two bands, these two types of the bands, first we have to know about the IR and Raman spectroscopy. You people may know about the IR spectroscopy in your spectroscopic subject. IR spectroscopy में ये होता है कि हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल IR एक्टिव तब होता है जब उसमें डाइपोल मोमेंट दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो वो बैंड जो वो बॉन्ड होता है दैट इज़ गिविंग स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी विच इज़ द IR active frequency. ठीक है? In order to derive the IR and Raman bands for a molecule, you should know about the degrees of freedom. Degrees of freedom, they are actually the number of motions possible in a molecule. ठीक है? So you can calculate degree of freedom in a molecule by using very simple formula, that is 3n. ठीक है? 3n जो है ये आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करके बताता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स इन द 3n फॉर्मूला. ठीक है? सो फॉर अ मॉलिक्यूल विद n एटम्स देयर आर 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. रिमेंबर वी लिव इन अ 3-dimensional वर्ल्ड ऑफ x, y and z कोऑर्डिनेट्स. ठीक है? 3-dimensional हमारी जो लिविंग सिस्टम है ये पूरा 3-dimensional है. सो यू कैन कैलकुलेट दिस बाय दिस 3 इज फॉर द 3 dimensions and n is for the number of atoms. So for a non-linear molecule, 3 degrees of freedom can be assigned to translation motions, moment of a body as a whole. ठीक है? मतलब 3n degrees of freedom जो हम assign करते हैं, so they may be either belonging to translational motions. ठीक है? translations मतलब हम जब पूरी की पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती है, so this is called translational motions. Then the 3 or to rotational motions. So the next one is the 3 motions, and there are rotations when the body is revolving around a point. ठीक है? ट्रांसलेशन में होल बॉडी मूवमेंट करती है, रोटेशन में एक पॉइंट इर्द घूमती है. The remaining motions of the atoms are displacement of the atoms from their mean position. और third type of the motion जो है वो with respect to mean position, या वो elongate होता है या वो contract होता है. ठीक है? So this is the kind of motion which is considered with respect to the mean position. This is called vibrational motions. तो हमारे पास 3 types के motions हैं. One is translational motions, the second one is rotational, and the third one is vibrational. So we will consider these things: translational, vibrational, and rotational. So these motions collectively, they are giving the 3n degrees of motions, 3n degree of freedom. ठीक है? So these fundamental vibrations are referred to as normal modes. Thus a non-linear molecule has 3n minus 6 normal modes. 6 हम इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि 6 जो है ये आता है 3 रोटेशन से और 3 ट्रांसलेशन से. तो आपके पास जो अब हम वाइब्रेशनल मोशंस कैलकुलेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जो नॉन लीनियर होता है, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 3n माइनस 6. नॉन लीनियर मतलब जिसका स्ट्रक्चर लीनियर ना हो.
अब वाटर जो है उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोशंस जो होंगे दैट विल बी 3n-6. सो 3 इंटू, अब वाटर में 3 एटम्स हैं, सो 3 इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 3. 3 मोशंस, 3 वाइब्रेशनल मोशंस हैं. और अगर आपके पास मॉलिक्यूल लीनियर होता है, so the number of vibrations can be calculated by 3n-5 formula. For water, which of course has been intensively studied, we know that the 3 vibrations are as follows. इसमें 3 vibrations हैं. Vibrational spectroscopy, IR spectroscopy उसको कहा जाता है. So हम vibrational इसलिए consider कर रहे हैं, ठीक है. As a whole हम consider करेंगे 3n degrees of freedom consider करेंगे, लेकिन उसमें हम सिर्फ vibrations को लेंगे क्योंकि हम IR spectroscopy को पढ़ रहे हैं. 3 fundamental modes of vibration for water are number 1. जी सर ये 3n-6 जो है, जब हम इसमें 3 पुट करते हैं तो 6 - 6 से तो 0 नहीं आता, इसे 3 किस तरह आता है? नो, 3 into 3 is equal to 9. यस सर. 3 into 3 is equal to 9 minus 6 is equal to 3. ठीक है. So three fundamental modes of vibration for water are number 1. This one is the, अब 3 से जो vibrations हैं water के लिए वो किस तरीके से हैं. Number 1 is symmetric stretch. Symmetric stretch पे दोनों bond जो हैं at a time वो extend होते हैं या दोनों bond at a time contract होते हैं. So this is called symmetric stretch. दूसरा है asymmetric stretch, जिसमें एक बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरा बॉन्ड एक्सटेंड होता है. सो दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक स्ट्रेच. ये थर्ड टाइप ऑफ द मोशन दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक बेंड, जिसमें जो ये हाइड्रोजन एटम्स हैं या ये एक दूसरे से दूर जाते हैं या ये एक दूसरे के करीब आते हैं. सो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक बेंड. अब ये तीनों जो हैं ये आपके पास वाइब्रेशंस शो करते हैं एंड दे आर हैविंग स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज which are observed in the IR regions like 3700 per centimeter, 3600 per centimeter for the asymmetric stretch and 1600 per centimeter for the symmetric band. तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको डिराइव करेंगे कि ये किस तरीके से आते हैं. The symbol used to describe these modes A1, B1 are the same molecular symbol that we encountered in our discussion of character tables. अब इनके लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे तो वो तो वही कैरेक्टर टेबल के सिंबल्स होंगे जिस तरह हमने पिछले बॉन्डिंग के लिए यूज़ किए थे. तो उस तरीके से हम वही सिंबल्स यूज़ करेंगे A1, B1, A2, B2 एंड E लाइक दीस वंस. इन अदर वर्ड्स जी, अगर आप ज़रा अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए तो बहुत अच्छा होगा, हमें नज़र नहीं आ रहा है. और मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है. द स्क्रीन इज़ ऑलरेडी शेयर्ड. So this is in other words the vibrations which are molecular properties can described by symmetry species are irreducible representations. So we can derive the vibrations from the irreducible representations of the molecule. In fact, much of the literature involving vibration spectroscopy uses these symbols as a shorthand way of communicating informations. अक्सर हम ये कहते हैं कि हम जब लिटरेचर में लिखते हैं so we assign each vibrations a specific molecular symbol like A1 for a specific vibration. तो अब हमें उससे पहले से हमें पता होता है जिन्होंने ये कैरेक्टर टेबल को डिराइव किया होता है, तो they know that this symbol has specific meaning. ठीक है. Either this is assigned to the symmetric stretch or this is assigned to the asymmetric stretch or this is assigned to the bend. ठीक है. तो हम ये symbol जो use करते हैं, this is a shorthand form of communication. ठीक है. It should be pretty obvious that the number of vibration increases rapidly with even modest increase in the number of atoms in the molecule. Determining the kind of vibration by inspection as we did for water now becomes much more difficult. For example, consider the following compounds like
H2O में 3 एटम्स हैं तो आपके पास 3 वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं। PH3 में 4 एटम्स हैं सो 6 वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं। CO2 में 4 एटम्स हैं सो 6 वाइब्रेशंस हैं। So you have to calculate these vibrations from the formula 3n minus 6 or 3n minus 5. ठीक है। So character table में जो हमने assign किए हुए हैं वो that mu1 and mu3 this is assigned like this one. You may see that this is mu1 and mu3 is assigned to A1 and mu2 is assigned to B1. So आप mu1 और mu3 की जगह A1 भी लिख सकते हैं और mu3 की जगह B1 भी लिख सकते हैं. For example, for water, the symmetries of translation Tx, Ty, Tz can be gleaned directly from the C2V character table. They are A1, B1 and B2. जो हम ट्रांसलेशन मोशंस के लिए करते हैं तो ट्रांसलेशनल मोशन जो कैरेक्टर टेबल हमें शो कर रहा है सो दैट इज A1, B1 and B2. Why? Because Z, X and Y symmetry levels are there for these molecular symbols. So जहाँ पे इस तरह की चीज़ लिखी होती है this is for translational, this is for translational, this is for translational. Whereas अगर R लिखा होता है so this is for rotational motion, this is rotational, this is rotational. So we can say that translationals in C2A point group are A1, B1 and B2. See this one again, this is A1, B1 and B2. So these three are translational motion. We can represent all the three types, all the three of these degrees of freedom by a presentation. This is the symbol, Greek symbol जिसको हम gamma कहते हैं, ठीक है? So gamma t, and we can write the expression below. Gamma t is equal to A1 plus B1 plus B2 translational motions के लिए, ठीक है? So translational motion के लिए आपके पास molecular symbol A1, B1 और B2 हैं. We know that A1, B1 and B2 are merely the shorthand notations for the symmetry species, irreducible representation. We can therefore simply write down the character of gamma t by adding the individual characters for A1, B1 and B2 from the C2V character table. So gamma t जो है अब हम सिर्फ हमारे पास एक रो जो है हमने ख़त्म कर दिया क्योंकि हम सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए करते हैं. सो Z, X एंड Y. तो अब इनको सम अप करें तो आपके पास इसके लिए रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा. सो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3. 1 - 1 - 1 इज इक्वल टू -1. 1 + 1 + -1 इज इक्वल टू 1. 1 - 1 + 1 is equal to 1. So translational reducible representation is 3 - 1, 1 and 1. 4 आते हैं. In a similar manner, we can write down the reducible representation for all three rotations and all the vibrations. तो आप रोटेशंस के लिए भी इस तरह डिराइव कर सकते हैं, वाइब्रेशंस के लिए भी इस तरह डिराइव कर सकते हैं. रोटेशंस के लिए जब आप डिराइव करेंगे तो आप सिर्फ रोटेशनल वेक्टर को कंसिडर करेंगे. तो जब वो आपने डिराइव कर दिया सो दिस इज इक्वल टू 3 - 1 - 1 - 1. वाइब्रेशन के लिए जब डिराइव करेंगे सो दिस इज 3 1 3 एंड 1. जब आप इससे 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम डिराइव करेंगे सो सम दीज 3 मोशंस तो अब आपके पास गामा 3n आ जाएगा. सो दिस इज 9, this is -1, this is 3, this is 1. So 3n degree of freedom जो है ये आपके पास this is 9 - 1, 9 - 1, 3 and 1. ठीक है. So this is the reducible representation for the water molecule for 3n degrees of freedom. We can, number one, we can easily generate gamma 3n as a reducible representation for molecule if we know its point group symmetry. Number second,
मतलब हमें अगर पॉइंट ग्रुप का पता हो तो हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके लिए 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कैलकुलेट कर सकते हैं. We can easily convert the 3n gamma reducible representation into the sum of its symmetric species Mulliken symbol using a simple formula known as the reduction formula. तो अभी reduction formula की बात हम करेंगे कि reduction formula क्या चीज़ होती है. General method to obtain gamma 3n. Step 1. Take the character table for the molecule and add a row at the bottom. In this row, generate the reducible representation for gamma t or gamma xyz as we did above, simply by adding the characters of each operation which correspond to the molecular properties for x, y and z. जो characters, जो rows जिनके लिए सिमेट्री लेवल्स जो हैं उनमें आपके पास x, y और z लिखा होता है. So these rows, they are summed up. The characters of these rows are summed up as we did above, like this one. इसमें ये z, x, y, तो हमने इनके characters को sum up किया सर, बाकी characters को छोड़ दिया. For C2V, we have already shown that these are the characters corresponding to A1, B1 and B2. ठीक है, like this one. इस रो को हमने छोड़ दिया था because this is containing RZ, तो हम इसको नहीं consider करेंगे. So 1 plus 1 plus 1 3, 1 minus 1 minus 1 minus 1, 1 1 and minus 1 is equal to 1. 1 plus minus 1 plus 1 is equal to 1. सर इस H2 को या RZ को हम क्यों मतलब कंसीडर नहीं करते? Because this is corresponding to the rotational motion. हम सिर्फ translational motions को ले रहे हैं. अगर आप ये देखें, we are just only taking sigma t. ये देखें हमने लिखा हुआ है sigma t को हम ले रहे हैं. ठीक है, जब आप sigma t को लेंगे तो x y z लेंगे. जब हम सिग्मा रोटेशनल को लेंगे सो वी विल टेक द रोटेशनल वेक्टर्स. ठीक है, add another row below sigma t and write down the number of atoms which do not change their location during each symmetry operations. अब इसके नीचे ये जो है इसके साथ हम एक और रो लगा देंगे और हम इधर लिखेंगे सिग्मा number of atoms which do not change their position upon the symmetry operation. ठीक है, so जो हम सिमेट्री ऑपरेशंस करेंगे और कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेंगे तो उसको लिखेंगे. सो this is where you realize how useful a real molecular model set is. To do this, you will also need to know where the symmetry elements are and how the symmetry operations affect the molecule. Of course, you already know how to do this because you have studied Schoenflies notation and know how to assign the point group of a molecule. ठीक है, तो अब एक बात बताएं. So अगर हम E परफॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल पे तो कितने नंबर ऑफ अनमूव्ड एटम्स होते हैं? 3. वाटर मॉलिक्यूल में 3 अनमूव्ड एटम्स होते हैं जब हम आइडेंटिटी परफॉर्म करते हैं. जब हम C2 परफॉर्म करते हैं सो द नंबर ऑफ अनमूव्ड एटम्स इज 1. Only O cannot change its position, whereas the hydrogen, the 2 hydrogen change their position, so they are moved atoms. So number of unmoved atoms is only 1. Sigma V xz जब आप परफॉर्म करते हैं so this is number of unmoved atoms which is in the plane of the molecule. The number of unmoved atoms is equal to 3. All the 3 atoms they are unmoved. Sigma V dash जब हम करते हैं तो number of unmoved atoms that is equal to 1. Only oxygen remains where the 2 hydrogen they exchange positions. So translational gamma t and number of unmoved atoms, दो rows आपके पास आ गए which are marked as step 1 and step 2. Thus for water 3 atoms under E there are 3 unmoved atoms, but for C2 both hydrogens move, but since the O atom sits on the C2 axis it does not change its location and we recorded its
as 1 under the C2 column. The new set of numbers generated in step 2 is 3131. ठीक है? This is also a reducible representation and obeys the rules of the group. Now, what in step 3? In this step, we simply multiply together the characters that have been generated in steps 1 and 2. The result is the reducible representation R sigma 3n. ठीक है? R sigma total. It's that simple. Like sigma t और in number of unmoved atoms इन दोनों rows को multiply करें. So 3 into 3 is equal to 9. 1 into minus 1, 3 into 1 is equal to 3, 1 into 1 is equal to 1. This is called sigma 3n या sigma total भी हम इसको कहते हैं. So you will note that the new reducible representation 9 minus 1, 1 and 3 is identical to the representation for sigma 3n that we obtained previously by inspections. जो हमने इधर derive किया था, this is derived over here like 1, this one 9 minus 1, 3 and 1. ये हमने इससे डिराइव किया था कि 3 ट्रांसलेशन है, 3 रोटेशनल है, 3 वाइब्रेशनल है. सो सिग्मा 3n जो है आपके पास 9 minus 1, 3 and 1. और इधर हमने बिल्कुल मैथमेटिकली कैलकुलेट करके निकाले हैं. सो दिस इज 9 minus 1, 3 and 1. सो दिस इज कैलकुलेटेड वेरी इजीली. Reducing the reducible representation. So now the reduction formula is this one. To convert any reducible representation into sum of its irreducible representation, symmetry, species or molecule principle, we use a reduction formula. ठीक है? जो हम molecule symbols derive करेंगे using character table, तो वो हमारे पास एक formula है which is called reduction formula. This is AI is equal to 1 over G into summation GR into chi R R gamma लिखा हुआ है into chi R. This seemingly complex formula is actually very easy to use. मुश्किल तो लग रहा है लेकिन बहुत आसान है. AI ये आपको रिप्रेजेंट करता है the number of times and irreducible representation appear in the reducible representation. ये हमारे पास मतलब हम इसको मार्क करेंगे A1, A2 इस तरह की उससे. So this shows the number of times that irreducible representation appears in the reducible representation. कितनी बार irreducible representation किसी reducible representation में appear होता है. G is the order of the group. जो हम पहले भी मालूम कर चुके हैं. Order of the group is very easy. टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस को आप कैलकुलेट कर दें तो इसको हम ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कहते हैं. जी आर द नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन इन ईच क्लास. ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द क्लास. ये हम किसी भी क्लास के लिए जो ऑर्डर होता है वो उसको कहते हैं. एंड एक्स आर इंटू काई आर इंटू गैमा द करेक्टर ऑफ द ऑपरेशन in the irreducible representation and chi are the character of the operation in the reducible representation. ये आपको मैं character table में शो करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी. जी आर जो है ये आपके पास इधर किसी भी रिप्रेजेंटेशन के साथ कोई नंबर होता है. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग जी आर. सो अगर ये C2 के लिए हम लेते हैं तो इसके लिए 1 है. E के लिए हम लेते हैं तो इसके लिए 1 है. सिग्मा V के लिए लेते हैं तो दिस इज 1. सिग्मा V डैश फॉर दिस वन इट इज 1. So for all the symmetry operations in water, GR is 1. ठीक है. Chi R into gamma, this is these irreducible representation जो और reduce नहीं हो सकते. And chi R, this is the reducible representation which is obtained for gamma 3n. ठीक है. तो ये आपके पास ये फार्मूला है और इसका पूरा और ऑर्डर जो है ये आपके पास ये है कि 1 + 1 + 1 + 1 = 4. सो अगर हम इस फार्मूले के थ्रू इस कैरेक्टर टेबल को सॉल्व करते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स A1 अपीयर इन दिस रिप्रेजेंटेशन इज देयरफॉर A1 = 1/4
1/4 इसलिए क्योंकि 1/g है। 1/g जो है, g जो है ये आपके पास ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है। ऑर्डर ऑफ द दिस कैरेक्टर टेबल इज 4, इसके लिए हमारे पास 4 है। सो 1/4 1 into 1 into 9, so 1 for the reducible representation, 1 for the order of the class, and 1 for the 9 for the irreducible representation, ठीक है। So 1 into 1 into 9 plus 1 into 1 into -1. So 1 is the order of the class, 1 is the character, and -1 is the reducible representation. So 1 into 1 into -1 plus 1 into 1 into 3. So 1 into 1 into 3. Then 1 into 1 into 1. So 1 into 1 into 1. So इसको जब आप सॉल्व करते हैं 9 minus 1 plus 3 plus 1, 4 plus 1 minus 1 कट हो जाते हैं, plus 4 plus 9 is equal to 12. 12 divided by 4 is equal to 3. So number of times A1 appear in this character table is 3A1. So sigma 3n contains 3A1 symmetry species. The number of the other symmetry species are calculated as follows. A2 is equal to 1/4 और बाकी वो derivation है, so you can derive it as 1. AB1 is equal to 3, AB2 is equal to 2. तो ये आपके पास हमारे पास इस कैरेक्टर टेबल में we can now write it as sigma 3n is equal to 3A1 plus A2 plus 3B1 plus 2B2. So this is 2 plus 3 5 plus 1 6 plus 3 9. ठीक है, तो ये अगर आप इनको सम अप करें तो ये आपके पास 9 मोशंस देते हैं जो 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो करते हैं। 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द वाटर मॉलिक्यूल इज 3 into 3 is equal to 9. तो ये भी वही 9 नंबर आपको देते हैं। 3 plus 1 4 plus 3 7 plus 2 is equal to 9. Exactly what we got by inspection above. We can now subtract the symmetry species for this translation and rotation. This will give us the number of symmetry species of the fundamental modes of vibrations. अगर आप करेक्टर टेबल को देख लें तो इसमें आपको ट्रांसलेशनल मोशन नजर आते हैं, लाइक इन Z, X, Y, एंड रोटेशंस नजर आते हैं, RZ, RY एंड RX. इसमें आपको वाइब्रेशंस नजर नहीं आते। तो वाइब्रेशंस आप ऑब्टेन कर सकते हैं बाय जस्ट ओनली सब्ट्रैक्शन, ठीक है, फ्रॉम द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आप इसको लेने, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये हमारे पास होता है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, नंबर ऑफ रोटेशनल, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल, ठीक है। तो आप टोटल से जब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल माइनस करेंगे तो वाइब्रेशंस आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगे। लाइक सो 3 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3A1 प्लस A2 प्लस 3B1 प्लस 2B2। ये अभी हमने यहाँ से किए। सो ट्रांसलेशनल मोशन जो हैं इस कैरेक्टर टेबल के मुताबिक वो A1 है, B1 है और B2 है। सो वी कैन राइट इट A1 प्लस B1 प्लस B2। रोटेशनल मोशन जो है इस कैरेक्टर टेबल के मुताबिक A2 है, B1 है और B2 है। सो वी कैन राइट इट A2 प्लस B1 प्लस B2। सो हम अब इससे माइनस करेंगे इसको। सो 3A1 माइनस A1 इज इक्वल टू A2, 2A1, सो 2A1 इधर रह गया। A2 माइनस A2 इज इक्वल टू 0, ख़त्म हो गए B1 और B1, 2B1 आप माइनस करें 3B1 से, तो आपके पास आ जाता है 1B1। तो ये आप इधर आ गए, B1 प्लस B2 माइनस 2B2 इज इक्वल टू 0। सो आपके पास वाइब्रेशनल मोशंस जो calculate हो के आते हैं, that those are 2A1 plus B1. So the three normal modes of vibration for water have the symmetries A1, A1 and B1.
जो अभी हमने पहले ही इसको मार्क किया था इधर A1 एंड B1 mu1 mu3 mu2 तो ये हमने पहले ही मार्क किया हुआ था सो दिस इज 2A1 and plus B1 they are the vibrational motions or IR active vibrations in water molecule. If you people have any question in this lecture you can ask.